गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया ईयू एफटीए। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ईयू लीडर्स समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ इंडिया ईयू एफटीए। अब दोनों जो साइड्स हैं ये लगभग 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती हैं। ईयू जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है आफ्टर द यूएस। तो ईयू ने एग्री किया है कि वो रिमूव करेंगे टैरिफ्स ऑन 99.5% ऑफ द आइटम्स जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उस रीजन को। इंडिया जो है वो टैरिफ कंसेशंस देगा लगभग 97.5% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू ऑफ ईयू एक्सपोर्ट्स को। ये जो लिबरलाइजेशन की जा रही है ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिया के डेवलपमेंटल कंसर्न्स और सब्सटैंशियल मार्केट एक्सेस गेन्स ऑल्सो। तो यहाँ पर कुछ जो है आपको फोटोग्राफ में टैरिफ्स बताए हुए हैं कि एफटीए के बाद कितने हो जाएंगे। तो इंडिया ने लगभग 97% ऑफ टैरिफ लाइंस जो है उस पर रिडक्शन किया है, जो कि इंडिया को मिला है 97% ऑफ टैरिफ लाइंस पर रिडक्शन, जो कि 99.5% ऑफ ट्रेड वैल्यू को कवर करेगा। लगभग 90.7% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो नाउ अब जो है जीरो ड्यूटी एक्सेस गेन करेंगे ईयू की मार्केट में फ्रॉम डे वन। खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। ईयू ने कमिटमेंट भी की है अक्रॉस 144 सब सर्विस सब सेक्टर्स ऑल्सो। ये एनहेंस करेगा अपॉर्चुनिटीज़ इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए और फार्म्स के लिए एक हाई इनकम मार्केट में। तो इंडिया ने क्या कंसीड किया है? इंडिया ने एग्री किया है कि ड्यूटी एलिमिनेशन होगी या रिडक्शन होगी 92.1% ऑफ टैरिफ लाइंस पर। लगभग हाफ ऑफ दीज टैरिफ लाइंस जो है वो इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन देखेंगी। हाई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट्स जो है ईयू से वो उसमें हमारे को बेनिफिट होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनपुट कॉस्ट जो है इंडियन इंडस्ट्री की वो कम होगी और मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे डेयरी या फिर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उनको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, अपने फार्मर्स को बचाने के लिए। ऑटोमोबाइल और वाइन ये दो कंटेंशियस इश्यूज थे, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ रीच किया गया है। लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज़ दी तो गई हैं यूरोपियन कार्स को, लेकिन उस पर कोटा लगाया गया है। सिमिलरली वाइन्स पर भी ये कोटा लगाया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ईयू सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है दोनों में लार्जली। और ये जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन हो रही है इससे जो है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन्स खत्म होगी दोनों साइड्स के लिए। इंडिया जो है वो मेजर गेन कर रहा है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। ईयू जो है उसके लिए इंडिया एक लार्ज और फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। और कोर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो कंसर्न्स ऑफ फार्मर्स को भी एड्रेस किया गया है। एफटीए जो है प्रोवाइड करेगा मोस्ट फेवर्ड ट्रीटमेंट इंडिया के लिए या दोनों साइड्स के लिए इनफैक्ट, डेडिकेटेड टेक्निकल डायलॉग और ईयू का सपोर्ट टू इंडिया फॉर क्लाइमेट ट्रांजिशन। सर्विसेज जो है वो डोमिनेट करेगा बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ को। एग्रीमेंट डिज़ाइन किया गया है एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो। अब ये इंडिया को एक सपोर्टर ऑफ ओपन फेयर स्टेबल रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर की तरह प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है, दुनिया में। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा टैरिफ वॉर्स जो चल रही हैं कि इंडिया जो है वो बायलैटरलिज्म की तरफ जो है वो ईजी है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूजीसी न्यू रूल्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी ने कुछ नोटिफाई किए हैं रेगुलेशंस जो कि एड्रेस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड बायस को इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब ये मूव क्यों आ रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है वो इंटरवेंशन किया था इस पर्टिकुलर इशू पर। तो ये रूल्स बेसिकली यूजीसी के जो अर्लियर इक्विटी रेगुलेशंस हैं 2012 के, उन्हीं का अपडेटेड वर्जन है। तो ये रेगुलेशन एम कर रहा है इरेडिकेट करना डिस्क्रिमिनेशन को हायर एजुकेशन पर ऑन ग्राउंड सच एज रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी। ये इसका पर्टिकुलर फोकस है प्रोटेक्ट करना शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को। ये रूल्स रिप्लेस कर रहे हैं अर्लियर 2012 के जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशंस को। ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं डिफाइंड स्ट्रक्चर और प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एंड एड्रेसिंग कंप्लेंट्स। तो थ्री टियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दे रहे हैं ये रूल्स। पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो कि हर इंस्टीट्यूशन को बनाने पड़ेंगे ताकि पॉलिसीज़ फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स को देखा जा सके। और ये कोऑर्डिनेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के साथ। 5 फैकल्टी मेंबर्स होंगे इसमें। फिर होगी इक्विटी कमेटी जो कि सपोर्टेड होगी एक 10 मेंबर इक्विटी कमेटी के साथ। कमेटी जो है कंप्लेंट रिसीव करने के 24 घंटे के अंदर मिलेगी और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी।
फिर इक्विटी स्क्वाड्स जो होंगे वो मेंटेन करेंगे विजिलेंस और प्रिवेंट करेंगे डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपस, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को ही बनाने होंगे ऑफ कोर्स। अगर हम 2012 के रूल्स के साथ इनको कंपेयर करें, 2012 के जो रूल्स थे वो लार्जली एडवाइजरी थे। ये जो है रूल्स ये मैंडेटरी और एनफोर्सेबल हैं। 2012 में कोई एक्शन नहीं था, इंस्टीट्यूशंस जो उन रूल्स को कंप्लाई ना करते, लेकिन इस बार जो है यूजीसी मॉनिटर करेगा कि नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू कि क्या इंस्टीट्यूशंस इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। अब 2012 के रूल्स जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी साइज बनाने को तो कहते थे, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन ही नहीं बता रहे थे। लेकिन ये रूल्स जो है वो एक डिटेल्ड मल्टी टीयर मैकेनिज्म बता रहे हैं। 2012 के रूल्स में क्लैरिटी ही नहीं थी कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पर, लेकिन ये इलेबोरेट प्रोसीजर बता रहे हैं ये वाले न्यू रूल्स जो हैं। अब 2012 में ओबीसीज को एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन इस बार ओबीसीज को पर्टिकुलरली कवर किया गया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वुमेन और बाकी के डिसएडवांटेज ग्रुप्स को भी कवर किया गया है। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इससे जो है हरासमेंट होगी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। उनका मेन ऑब्जेक्शन ये है कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट होती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूरेटम। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने प्रमोट करने को कहा है कोलैबोरेशन ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर इंडिया यूरेटम एग्रीमेंट। तो यूरेटम क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में साइन हुई। कॉमन मार्केट है डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए। ओरिजिनल मेंबर्स इसके बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी मेंबर्स ऑफ ईयू जो है वो इसका पार्ट बन गए। यूरेटम जो है वो रेगुलेट करेगा यूरोपियन सिविल न्यूक्लियर इंडस्ट्री को, करता है इनफैक्ट, और ये गवर्नड होता है बाय कमीशन एंड द काउंसिल, ठीक है, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंडर जो है ये काम करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलकर एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी जो है वो ऑर्गेनाइज की है फेलिसिटेट करने के लिए विनर्स ऑफ मॉडल यूथ ग्राम सभा। तो ये है क्या? ये बेसिकली एक सिमुलेटेड फोरम है स्कूल चिल्ड्रन के लिए कि वो पार्टिसिपेट कर सके मॉक ग्राम सभा सेशंस में और प्रमोट कर सके पार्टिसिपेटरी लोकल गवर्नेंस। तो इसको नेशन वाइड सभी स्कूल्स में रोल आउट किया गया है। ये बेसिकली मॉडल यूएन के इनिशिएटिव पर बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो हैं वो रोल प्ले करते हैं सरपंच, वार्ड मेंबर्स, विलेज लेवल ऑफिशियल्स का, इंक्लूडिंग विलेज सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी वर्कर्स। और इसके लिए पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो 20,000 रुपये पर स्कूल जो है वो देती भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पंचम। टॉपिक गवर्नेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पंचायती राज ने पंचम जो है वो पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट लॉन्च किया है, जो कि एक डिजिटल टूल है, डेवलप किया गया है कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ के साथ। तो एक फ्लैगशिप डिजिटल इनिशिएटिव है एम्ड एट एम्पावरिंग पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शनरीज। तो ये इनेबल करता है फॉर द फर्स्ट टाइम एक डायरेक्ट डिजिटल कनेक्ट विद बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड पंचायत फंक्शनरीज अक्रॉस द कंट्री। इसको इंटीग्रेट किया गया है भाषणी प्लेटफॉर्म के साथ, और इसलिए ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करेगा। सिटीजन्स जो है वो एक्सेस कर सकेंगे पंचम को थ्रू अ QR बेस्ड एंट्री मैकेनिज्म। फैसिलिटेट करेगा क्विकर डिसीजन मेकिंग, फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ फील्ड लेवल इशूज़। पंचम फैसिलिटेट करेगा टू वे कम्युनिकेशन, और ऑफिशियल्स जो हैं वो फीडबैक भेज सकेंगे, क्वेश्चंस पूछ सकेंगे और लोकल प्रॉब्लम्स फ्लैग कर सकेंगे डायरेक्टली टू द मिनिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाकालेश्वर टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पटिशन जो कि चैलेंज कर रही थी वीआईपी दर्शन की प्रैक्टिस को, उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया है महाकालेश्वर टेम्पल में जो प्रैक्टिस चलती है उज्जैन में। तो महाकालेश्वर टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, शिप्रा रिवर पर ये उज्जैन में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है ये, और एंशिएंट टाइम्स में ये से बना हुआ है। इसका इवन पुराण में भी मेंशन है। पोएट कालिदास भी इसके बारे में मेंशन करते हैं। करंट स्ट्रक्चर जो है वो 18th सेंचुरी में बनाया गया बाय मराठा रूलर राणोजी शिंदे, और ये टेम्पल जो है इसको कई बार डिस्ट्रॉय और रिबिल्ड किया गया है। अब ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है इसको आप देखोगे तो मराठा, भूमिजा और चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो स्प्रेड है ओवर 5 लेवल्स, वन ऑफ विच इज़ अंडरग्राउंड। यहाँ पर सभा मंडप है, गर्भगृह है, और ये इलेबोरेट स्कल्पचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हिंदू डीटीज और माइथोलॉजिकल सीन्स के, ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India EU FTA. This topic is important for your economy section. So at the India EU Leaders Summit, the Indian Prime Minister, European Council President, European Commission President has announced the successful conclusion of India EU FTA. So both sides together account for about 25% of global GDP. EU is India's second largest export destination after the US. EU has agreed to remove tariffs on 99.5% of the items India exports to this region. And on India's side,
tariff concessions have been offered on 97.5% of the traded value of EU exports. So this asymmetrical liberalization is reflecting India's developmental concerns while also ensuring substantial market access gains. So what India gains from the agreement? So this picture tells you more about it in elaborate manner, but you do not need to remember this the every aspect of tariff concessions that India has made. So India has largely made tariff reductions across. India has secured large tariff reductions largely across 97% of tariff lines, which means 99.5% of trade value. About 90.7% of India's exports will enjoy zero duty access to the EU market from day one. Key beneficiaries would include labor intensive sectors, which are important for employment generation and exports led growth in India. EU has also made commitments across 144 service subsectors, which would enhance the opportunities for Indian professionals and firms in high income market. What India has considered? Of course, India has agreed to duty elimination or reduction on 92.1% of tariff lines, which covers about 97.5% of EU exports to us. So nearly half of these tariff lines will see immediate duty elimination. High technology imports from the EU are going to reduce the input cost for Indian industry and support manufacturing competitiveness. Sensitive sectors like dairy and certain agriculture products have been excluded from full liberalization so as to protect farmers' livelihoods. Automobiles and wine were among the most contentious issues, so a compromise has been reached through quota based systems. India has agreed to lower import duties on European cars, which have been priced between 25 lakh rupees from 110% to as low as 10%. Of course, this will be subject to quotas and price based categories. Similarly, a quota based approach has been followed for the wine also. Okay. So India is the fourth largest economy and EU is the second largest economy, and both are complementary rather than competitive. So this trade agreement will also reduce excessive dependence on China-centric supply chains. For India, major gains will be made in labor-intensive sectors. For the EU, India is a large, fast-growing market. Okay. So, core agriculture sectors have been excluded, like the dairy, cereals, meat, select fruits, and vegetable sector. FTA also provides most favored treatment, dedicated technical dialogue with each other, and EU's support to India for climate transition. Services are going to dominate the bilateral trade growth, and agreement has been designed as a living document, which means there will be periodic review clauses, consultation mechanisms for emerging technologies, and regulations. So, India is being projected as a supporter of open, fair, stable, rule-based trading order, and this is sending a strong message amid tariff wars, protectionism, and unilateral trade actions by the US. So the next topic is UGC new rules of caste-based discrimination. This topic is important for your social issues. UGC has recently notified new regulations to address discrimination, including caste-based bias in higher education institutions, and this move is followed by intervention by the Supreme Court of India. So these rules are updated version of the UGC's earlier equity regulations, which were issued in 2012. So these regulations aim to eradicate discrimination in higher education on grounds like religion, race, gender, place of birth, caste, or disability. The particular focus will be on protecting scheduled castes, scheduled tribes, socially and educationally backward classes, economically weaker sections, and persons with disabilities. So these rules replace that earlier 2012 rules, and they are establishing a defined structure and procedure for filing and addressing complaints as well. So these new rules are introducing a three-tier institutional mechanism. First will be the Equal Opportunity Center. Every institution will have to set up these centers to oversee policies for disadvantaged groups. EOC will coordinate with district administration and police and facilitate legal aid when required. It will comprise of 5 faculty members with no category-wise reservation mandated. Then we will have a equity committee. So each institution will have this committee of 10 members. The committee must meet 24 hours of receiving a complaint and submit its report within 15 days. And there will be equity squads also, which institutions will have to establish to maintain vigilance and prevent discrimination on campus. So how these new rules are compared to the 2012 rules? In the 2012 rules, they were largely advisory, but the new rules are mandatory and enforceable. In the 2012 rules, there was no provision for action against institutions who failed to comply with the regulations. But now, UGC will monitor and they will take punitive action against defaulting institutions if they fail to comply with these rules. In the 2012 rules, there was equal opportunity cells, but there was no specification of their composition. But now, elaborate, detailed, and multi-tier mechanism has been made by the new rules.
The 2012 rules lacked clarity on complaint registration, but now the new rules have elaborate procedures for filing, examining, and resolving complaints. The 2012 rules focused mainly on SCs and STs only, but now the new rules specifically cover OBCs also, along with SC, STs, and of course, and persons with disabilities, women, and other disadvantaged groups. But there is also criticism. The critics are arguing that these rules could lead to harassment of students from general category. One of the main objections is the absence of penalties for false complaints of discrimination. Okay, so the next topic is Euratom. This topic is important for your international relations. European Union and India have recently committed to promoting collaboration on peaceful uses of nuclear energy under the India-Euratom Agreement. So Euratom is an international organization established under the Treaty of Rome in 1957. The aim is to form a common market for the development of peaceful uses of atomic energy. The original members were Belgium, France, West Germany, Italy, Luxembourg, and Netherlands. It subsequently came to include all members of the European Union. Euratom regulates the European civil nuclear industry and produces about 30% of energy in the US in the EU. It is governed by the Commission and Council, operating under the jurisdiction of the European Court of Justice. So the next topic is Model Youth Gram Sabha. This topic is important for your governance section. So Ministry of Panchayati Raj, in collaboration with Ministry of Education and Ministry of Tribal Affairs, is jointly organizing a national award ceremony to felicitate the winners of Model Youth Gram Sabha, which is a simulated forum for school children to participate in mock Gram Sabha sessions. It's a pioneering initiative to strengthen Jan Bhagidari and promote participatory local governance by engaging students in simulated Gram Sabha sessions. So it is an initiative based on the Model UN. So it is rolled out across the schools nationwide. Okay, so students from class 9 to 12 will play the roles of sarpanch, ward members, village level officials, including village secretary and Anganwadi workers. So Panchayati Raj Ministry is going to support each school with 20,000 rupees for holding these mock Gram Sabha sessions. So the next topic is Pancham. This topic is important again for your governance section. Union Minister of State for Panchayati Raj has launched this Pancham, which is a digital tool developed in collaboration with UNICEF. It's a flagship digital initiative aimed at empowering Panchayat elected representatives and functionaries. So this will enable a direct digital connect between the government of India and elected representatives and Panchayat functionaries across the country. It is being integrated with Bhashini platform also, which will support 22 Indian languages. Citizens would be able to access Pancham through a QR based entry mechanism. It will facilitate quicker decision making, faster resolution of field level issues, and stronger feedback loop between the grassroots and decision making centers. Pancham facilitates two-way communication, and officials can send back feedback. Uh, Officials can send feedback, ask questions, and flag local problems directly to the ministry. So the next topic is Mahakaleshwar Temple. This topic is important for your art and culture section. Supreme Court has recently denied to entertain a petition which challenged the practice of VIP darshan at the Mahakaleshwar Temple of Ujjain. So this temple is a Hindu temple dedicated to Lord Shiva. It is one of the 12 Jyotirlings, and it is located at the banks of river Shipra at Ujjain in Madhya Pradesh. It dates back to ancient times, and it has fine mention in the Purana also. The renowned poet Kalidas also mentioned about this temple in his creations. The current structure of the temple was built in 18th century by the Maratha ruler Ranoji Shinde, but the temple has been destroyed and rebuilt several times throughout its history. The architecture of the temple shows the influence of Maratha, Bhumija, and Chalukya styles of structural design. The temple is spread over 5 levels, one of which is underground. The Sabha Mandap, that is the assembly hall, the Garbhagriha, the Sanctum Sanctorum, and they are adorned with elaborate sculptures depicting various Hindu deities and mythological scenes. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.